बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपने बहुत सारे कुकिंग शोज में सुना होगा कि इस डिश को बनाने के लिए हम यूज करेंगे बस एक ही इंग्रेडिएंट। ऐसे ही आज मैं भी आपसे कहती हूँ, इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैं यूज करूंगी बस एक आउटलाइनर। एक आउटलाइनर के हेल्प से मैं बनाने वाली हूँ आज का ये पूरा पेंटिंग। कैसे, उसके लिए देखना पड़ेगा आपको ये वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। So today I am going to use cherry brown A4 size sheet and we will use this white color pen to make this drawing. Link is provided in description box to buy this pen. You can find this kind of pen on your nearby stationery shop also. So first I have drawn with pencil. Now I am doing outline with white pen. First do sketching in this way. We will draw the feathers of peacock in petal shape. Draw some branches around the peacock. Later we will add some leaves here. Now we will draw patterns. First do double line here. Now with the zigzag lines we will cover this part. When you draw patterns, do all the steps slowly for neatness. If you recreate this painting and you have any issue or any query, you can comment in comment box. Definitely I will reply you. Now pattern in feather. Here we will draw a fish pattern here in this way. In all the feathers we will draw this kind of fish pattern. To cover branches we will use slanting lines in this way. Now we will add some leaves.
carbon art or some kind of acrylic paints, but we have done it with the help of a single pen. Hope you guys like this tutorial. Please like, share and subscribe to my channel for more videos like this, and you can get this drawing frame also to decorate your walls. Thanks for watching.